कॉर्पोरेट आर्ट में अब हम बात करते हैं 1939 में शुरू हुई टाटा केमिकल्स की। जी हाँ, करीब 25,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप वाली टाटा केमिकल्स बेसिक केमिस्ट्री एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी के पास एशिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वर्क्स है, साथ ही ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर और सिक्स्थ लार्जेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के पास भारत के अलावा बहुत सारे देशों में कारोबार है, फैसिलिटीज़ अमेरिका, यूके, केन्या में। और अगर कंपनी के आगे के प्लान्स पर हम नज़र डालें तो वो समझने की कोशिश करेंगे क्या है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन में, ग्रोथ आउटलुक। और अभी हाल ही में फिच ने इनफैक्ट कल रिवाइज़ की है रेटिंग्स कंपनी में, यहाँ पर आउटलुक टू पॉजिटिव किया है फॉर टाटा केमिकल्स। चलते हैं सीधे कंपनी के एमडी एंड सीईओ आर मुकुंदन के पास। मिस्टर मुकुंदन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले समझना चाहेंगे बिजनेस आउटलुक क्या दिख रहा है सर, डिमांड कैसी दिख रही है इस वक्त, प्राइस ट्रेंड्स फॉर सोडा ऐश क्या है, क्या ट्रेंड्स हैं एज वी गेट इनटू अ न्यू ईयर सून सर, न्यू फाइनेंशियल ईयर? थैंक यू स्वाति। आई थिंक जो जो मार्केट broadly for the chemical sector overall बहुत पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट है। डिफिकल्टी विच हम लोगों ने परेशानी जो शुरुआत में हुई थी पिछले साल में विद द अनफॉर्चुनेट कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप, आई थिंक मोस्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री हैज बीन एबल टू weather the storm well, and our revenues, margin, सब कुछ it has held up very well. And आगे भी यही संभावना है कि revenue growth will continue as well as the margins will probably hold up during the year. Of course, for the customer, जो हमारे customer हैं उनके लिए कुछ तो benefit because of reducing energy cost, something we'll be able to pass on, but overall our margin will continue to get protected, and the demand environment continues to be, despite जो हालांकि जो बातें चलती हैं कि interest rate बढ़ने से recession आएगी and all that, but we are seeing no impact of that. I think we are seeing continued positive growth, क्योंकि जो consuming sectors हैं हमारे वो mainly the biggest fastest growing segments are the solar glass है, which is fundamentally जो अपने जो रिन्यूएबल पावर में जाता है, जो पीवी सेल्स में एज वेल एज लिथियम कार्बोनेट, उस वजह से जो डिमांड की ग्रोथ है वो 6% है। बाकी जो पुराने सेक्टर्स हैं उनमें भी ग्रोथ कंटिन्यूड 2 to 3% दिखती है। सो ओवरऑल आई थिंक बिटवीन 3 to 4% द ग्रोथ विल कंटिन्यू। सो वी सी अ स्ट्रॉन्ग future, continued positive movement for the chemical sector, especially the products we are in. ओके, सो दिस इज़ द ट्रेंड्स जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव आउटलुक है, क्लियरली आगे ट्रेंड्स अच्छे दिख रहे हैं। सर, क्या वॉल्यूम ग्रोथ का सेंस दिख रहा है इन Q4 एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर सर? सो नेक्स्ट ईयर सी जो स्पेसिफिक कंपनी की बात करें तो ओवरऑल मार्केट विल कंटिन्यू टू ग्रो अराउंड 4% और सो, एंड नॉर्मली जो है रेंज बिटवीन 3 and 5% ग्रोथ रहती है इस सेक्टर की। सो एवरेज पकड़ेंगे तो 4। As far as Tata Chemicals is concerned, as the हमारी जो capacity fully utilized है, as the capacity in India comes on stream, India में approximately 200,000 ton expansion है, वो उसमें से 100,000 ton इस आने वाले साल में उम्मीद करते हैं कि will be available mainly in the second half, commission हो जाएगी तो second half में approximately 100,000 ton additional capacity will come on stream. So we expect overall about 5% volume growth, and revenue growth आप डाल ही सकते हैं because the pricing will remain more or less constant and margins are more or less going to remain constant. We can easily say कि आप इंडस्ट्री को kind of beat करेंगे अगर आप 5% तक की वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, is that right? I think we'll probably be keeping in pace with industry because जो बाकी companies हैं, sometimes they grow at 3%, sometimes at 5%. So we expect about 100,000 ton additional volume to come to the market and in India, and mostly other parts of the world will be fully sold out. हमारी जो plant US में, केन्या में और UK में है। ओके, सो ट्रेंड्स यहाँ पर भी अच्छे दिख रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सर, रिपोर्ट्स आ रही थी अभी जिसने ये सजेस्ट किया है कि सप्लाई साइड इश्यूज अब
बहुत हद तक ख़त्म हो गए हैं एंड कैन वी अंडरस्टैंड कि अब सप्लाई के एंड पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एंड दैट विल हेल्प यू एड द वॉल्यूम प्रोडक्शन एज यू वर टॉकिंग अबाउट। और ऑल्सो आप जब बोल रहे हैं 100% कैपेसिटी पर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो क्लियरली नाउ फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन क्या थॉट प्रोसेस है, क्या अलाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स लाइनअप? So capex वही जो already lined up है, तो the capex expansion in India by 200,000 tons, उसका that will fully come on stream in the second half, and उस वजह से 100,000 ton जो additional volume इस साल में मार्केट में होगा। और इसके अलावा जो है we are working towards expanding next phase of 300,000 ton in India, as well as another approximately 400,000 ton in US. So 700,000 ton broadly will be in the next phase, which will happen over next 2 years. So those investments, is going now being invested by the company. So broadly, that is the trend. And we will continue to bring capacities on stream continuously every year. फेयर इनफ, तो यहाँ पर कैपेक्स भी लाइट अप है और कैपेसिटी ऑन स्ट्रीम आप लाते रहेंगे हर साल जैसे आपने बताया है। डिमांड भी क्लियरली स्ट्रॉन्ग है सर, वेल डाइवर्सिफाइड है आपकी कंपनी क्लियरली, बट किन जोग्राफीज़ पर अब आप देख रहे हैं ज़्यादा बुलिश आप हैं और कौन सी आउट परफॉर्म करेंगी, कहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ और देख रहे हैं मे बी टू एंटर और टू स्टार्ट योर बिजनेस जहाँ पर आप अभी प्रेजेंट नहीं हैं? So, with India is now the shining star. So, sub business mein, if you ask any sector, I think Indian market will continue to grow. In addition to that, US is again fairly strong. UK and Europe will remain steady at the current pace. Growth to nahi, but at least it's not falling. It is remaining constant. And Africa also, we are seeing signs of growth, especially वहाँ की जो माइनिंग सेक्टर है, बाकी सेक्टर्स है, वहाँ पे ग्रोथ इज पॉजिटिव. सो आई थिंक फंडामेंटली एशिया एंड फॉलोड बाय द अमेरिकाज एंड देन अफ्रीका. आई थिंक दीज आर द पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ. एंड क्योंकि हमारे फैक्ट्रियां तीनों जगह पे हैं, तो आई थिंक वी आर वेरी वेल पोजिशन टू सर्व कस्टमर्स इन दीज 3 ज्योग्राफीज. सर, मैं देख रही थी ग्रॉस डेट कंपनी का रिड्यूस हुआ है बाय ऑलमोस्ट 1150 करोड़. प्री पेमेंट ऑफ डेट जो आपने फर्स्ट 9 मंथ्स में किया है साल के, क्या और प्लान्स हैं डेट रिडक्शन को लेकर सर, और किस तरफ जाएगा ये? एक्चुअली जो आवर प्लान ब्रॉडली, हमारा जो प्लान था कि 100 मिलियन हर साल कम हो, तो वी हैव डन बेटर देन दैट. And next year also, we will be repaying close to at least $150 million. So we should, Kenya is already debt free, India is debt free, US would also be debt free in about 18 months or so, or somewhere there. And we are working hard to get the company debt levels to manageable levels, and at least in the next 24 months to reduce the debt, net debt completely to nil if possible. So that's really the plan, जो हमारा प्लान था कि 3 years में कम करेंगे, वी आर स्टिकिंग टू दैट सेम प्लान. ओके, वंडरफुल. तो वो आप ऑन ट्रैक हैं. इनफैक्ट यू हैव डन बेटर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट सर, इस पर थोड़ा हमें बताएं किस तरीके का सेगमेंट ग्रोथ देखा है, क्या टारगेट रेवेन्यू है इन द कमिंग ईयर्स? So we जो plant capacity of 5,000 ton, this was a initial phase to test the market. तो we've had the customer approvals में जरा देरी हुई है, तो the utilization is not full as yet. We are at about 65-70% utilization. So the unit should start reaching full utilization in the next year. And then we will see what to do in terms of moving further in the fermentation platform. और दूसरा जो सिलिका प्लांट है, that for the tire customer is fully utilized. And for the food grade, it is still not fully utilized. We are in the plan to convert our add capacity further in the tire area only. So we will be adding capacity during the year, and hopefully all these units will also get to full utilization and also give positive EBITDA contribution going forward. ओके, इंटरेस्टिंग. तो ये तो न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट की बात हुई. न्यू प्रोडक्ट्स को लेकर आपके क्या प्लान्स है? बिकॉज ऑब्वियसली यू कीप वर्किंग ऑन इनोवेशन एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. तो FY24 क्या नए प्रोडक्ट्स, क्या सेगमेंट्स में हम आपकी एंट्री देखेंगे? व्हाट आर यू वर्किंग ऑन?
So we are really focused on really building our silica business because it goes into rubber industry and tire industry as a part replacement for carbon black, and it's a sustainable product. And we have only 10,000 ton capacity. Initially, we will increase capacity to 13,000 and finally take it to close to 50,000 over a period of time, and that will continue to grow. So that is the new area which we are pushing ahead in terms of silica and rubber chemicals. In terms of the fermentation platform, I think we are still thinking through on our drawing board what are the options for it. There are many options: food products, bioplastics. So we will come and highlight which direction we want to take once we hit full capacity utilization on the current plant. ओके इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग प्लान्स है प्रोडक्ट्स को लेके। क्विकली सर, 600 से 800 करोड़ जो आपके पास कैश है उसको आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं? So our cash position will more or less remain same. Right now, if you look at on consolidated basis, about 1,200 crores of cash will remain almost flat. The free cash flow which we generate, part of it जो है वो debt repayment के लिए जाएगा और part of it will go towards growth investment. Every year जो है last year जो the current year which is running, our growth capex will be about 1,000 crores. Next year also we expect around 1,200 crores or somewhere there. So we will continue to invest at the rate of and also pay similar amount in terms of debt reduction. So the entire cash flow is being used for part growth and part debt reduction. ओके तो वहाँ पर दो जगह स्प्लिट होगा जहाँ तक कैश डिप्लॉयमेंट की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हमें हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए बिजनेस प्लान्स। तो ये थे टाटा केमिकल्स के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, बट आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।